They have not done solution, but they are doing electrochemistry. Yes, sir. What can I say? So in the last picture, we saw that haloalkenes are not going to show SN, rather they are going to show SE, that is electrophilic substitution reaction. Okay. Now, please write with me. Electrophilic substitution of haloarene. Right. Electrophilic substitution of haloarene. ठीक है, अभी यहाँ पे देखिएगा. These sides halogen atoms. Source plus M effects. Therefore, the electron density is higher at ortho and parapol. Ortho and parapol. I am writing the resonating structures here. ठीक है, थोड़ा तो आप लोगों को याद होगा resonating structure from the 11th standard. थोड़ा भी रिवाइज हो जाएगा. ठीक है, please here. If you want to बेहतर कैसे से you education when it atoms. This pi bond will shift here. I think give another resonating structure which will look something like this. Is my voice breaking a lot? Yes, Harsha, tell me. Yes. Just give me a second. How's it now? Any better? Yes, yes. So as this lone pair moves here, you will get a double bond X, and this halogen atom will have the two lone pairs, and there will be a positive charge. And you will get a negative charge on this carbon atom. These two pi bonds will be as it is. Now, again, K double bond B, single bond C, and C has a negative charge. What we can do, this will shift here, this pi bond is going to shift here, and you will get, now until unless you do this on with your own hand and you speak while doing it, then only you will gain some confidence in making a resonating structure. This will be as it is. Now, this negative charge is moving here, so you will get a pi bond here. This pi bond, it is moving on this carbon atom, so it will get a negative charge. And this pi bond is as it is, nothing has happened here. Now, next is this negative charge will move here. This pi bond is going to move here. You will get another resonating structure, which will look something like this. That you have this double bond X with a positive charge and two lone pairs as it is. This pi bond is as it is. The negative charge here is now a pi bond. The pi bond has been into negative charge. Now, this negative charge is going to go into this bond. This pi electrons are going to move here, and that will neutralize the halogen atom. And we will get a single bond halogen with three lone pairs. The pi bond will be here, here, and here. Now, if I look at the resonating structures and then try to make a resonance hybrid from this, then I will make a resonance hybrid which will be something like this. We'll have a benzene ring, then there will be a halogen atom like this.
Now, this halogen atom and benzene ring, they will be having partial double bond character because in some of the resonating structures, we are having single bond, some of them having double bond. So you will have partial double bond character here. Next is all the pi bonds here. Like all the bonds in the benzene ring, it is what? It is partial double bond because if I look at the first and second carbon in the first structure, it is double bond. The next structure, it is single bond. And the rest of the structure, it is single bond. If I look at the second and the third carbon atom, then it is single bond, double bond, double bond, double bond, right? So we can see that it is having partial double bond character. All of these bonds are having partial double bond character. Now, next, regarding the charges, I can say that the positions that is ortho with respect to halogen atom, these two positions are getting negative charges in some of the resonating sections. That is why they will get a delta negative charge. Similarly, the para position with respect to the halogen atom, it is also getting negative charges, so it will be delta negative. So from here, we can say that this halogen atom, it has higher electron density at ortho and para position. That is why whenever an electrophile is going to attack on this halogen atom, electrophile will be added on the ortho and para position. So we can say that therefore, X group is ortho para directing. Is ortho para directing. Please copy this down. Raise your hand once you are done. For Rishita. Rishita, जल्दी लिखिए, क्या कर रहे हैं आप अपने जैसे? अच्छा, आपके स्कूल में तो अभी सोल्यूशन ही चल रहा होगा, मतलब सोल्यूशन ही हो रहा होगा ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट हुआ होगा तो होगा, राइट? Sir, the Yes, Harsha? going to start parallel chemistry tomorrow. मुबारक हो, आपको तो कंप्लीट है। ये Yes, sir. मतलब ये क्या ही करते हैं, मतलब हमको तो समझ ही नहीं आता है, मतलब टीचर्स क्यों करते हैं ऐसा? लाइक व्हाट इज द नीड? भाई आपको 10 चैप्टर पढ़ाना है तो पढ़ाना ही है, ऐसे जंप मारने से इधर से उधर क्या ही हो जाएगा? हाँ, सोल्यूशन से सीधा जंप मार दिया, हेलो लेकिन हेलो, से कोई नुकसान ही होता है बच्चों का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हम चाहते हैं कि एक फ्लो में खत्म, चाहे आप स्टार्ट चलिए, ठीक है, आप स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, अब स्टार्ट कीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पढ़ाइए, बिकॉज ऑल ऑफ दीज रिएक्शंस आर गोइंग टू बी इन अल्कोहल फिनॉल्स आल्सो। जो हम लोगों ने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल पढ़ा है, दोज विल बी रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एज वी हैव सीन, केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे, तो वो एक लूप बना रहेगा ना, बार बार रिवाइज होने का। और ये अभी रिश्ता की क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी चल रही है, हैलोल्किन भी चल रहा है, आपको सोल्यूशन से हैलोल्किन लेके फिर वो उधर ले जाएंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डीएनएस ब्लॉक भी पढ़ाएंगे फिर आपको। तो यूनिट टेस्ट से आई एम सॉरी, ठीक है, यूनिट टेस्ट इज ऑन योर ओन, यू आस्क फॉर एनी लेक्चर, आई विल प्रोवाइड दोस लेक्चर्स फॉर यू गाइस, आपको रिकॉर्डिंग्स देखना है तो। लेकिन हर्षा आपने सही किया, नहीं हमने आपको कहा था कि आप दोनों कर लीजिए, सही कह रहे थे हम, है ना? Yes, sir. फायदा हो जाएगा अब आपको, चलिए। हाँ, so now we are going to look at the reactions. Now these reactions are some reactions that we have already studied in the 11th standard. ठीक है, individually with benzene, उसी को हम लोग halorene के साथ करेंगे. Now these are the reactions which are going to be there in this chapter. The next chapter 2 times. एक तो when you will learn about phenol, and then when you will learn about anisole. There are 2 benzene containing groups there. Then you will learn about carbonaldehyde, benzaldehyde, then acetophenol, then benzoic acid. Okay, then you will learn all of these reactions for aniline. So there is 7 times you are going to see these reactions. सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, मतलब इंक्लूडिंग बेंजीन, आई थिंक हमने बेंजीन को धोखा तोड़ दिया शायद। 6 टाइम्स तो कम से कम आप देखेंगे ही, 1 2 3, हाँ नहीं 7 टाइम्स, वी आर गोइंग टू लुक एट दीज रिएक्शंस 7 टाइम्स। एक बार देख लीजिए आराम से, ठीक है, दिस इज योर हैलोअरीन, देयर इज सम हाइड्रोजन एटम हियर, बिफोर फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जनरली होंगे, ठीक है, फ्लोरीन जनरली नहीं लेते हैं, इट्स नॉट वेरी रिएक्टिव। अच्छा, अब यहाँ से क्या करना है आपको, देख लीजिए आराम से, उसके बाद बनाइए। You'll have 5 reactions. So you'll have 1,
There will be 2. There will be 3. I think this will be fine. इसको I think जैसे सीधा कर देना चाहिए। I think that one is ठीक है 5 reactions। अच्छा अब यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं? Here I am going to put some other halogen or same halogen x dash 2 हम कर दे रहे हैं ना, you are going to have Br2 Cl2 I2 इस तरह कुछ होगा। Generally again I'm saying chlorine और bromine ही लेते हैं इसके लिए। If you are getting chlorine then the catalyst that you can take is FeCl3 or you can take AlCl3। ठीक है। If you are taking Br then you can take FeBr3 or you can just take Fe also, both of them are going to work। ठीक है। क्लोरीन के लिए क्या करना है? FeCl3 और AlCl3। Br3 के लिए FeBr3 और you have to take iron। दोनों नहीं लेना है, एक ही लेने से काम चल जाएगा। These are the halogen carriers बोलते हैं इनको। प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा? You will get benzene ring, there will be a halogen atom जो आपसे पहले से ही था यहाँ पे मौजूद। Take this halogen atom and then you will get another halogen atom on the ortho position and आपको एक और प्रोडक्ट मिलेगा, that will be the para product। We'll copy this down। ठीक है। Similarly नेक्स्ट आपके पास जो रिएजेंट है दैट इज कंसंट्रेटेड HNO3, द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4। द प्रोडक्ट्स हियर एक से बीच को थोड़ा you will have the halogen as it is, ortho you will get NO2 and then आई एम मेकिंग द halogen यहाँ पे। ठीक है ना, और ये पैरा थोड़ी वैसे नहीं बनाते, आप लोग कंफ्यूज जाइएगा। इसको थोड़ा और शिफ्ट कर देते हैं ऊपर। यहाँ halogen, यहाँ पे आपके पास NO2 होगा। नेक्स्ट यू कैन टेक रिएजेंट कंसंट्रेटेड H2SO4, कॉन्क H2SO4। The products are going to be, the halogen atom will be as it is, ortho position में आपको क्या मिलेगा? SO3H। Here also the para position SO3H। Next the reagent is quite important, that is Rx।
any alkyl halide in the presence of AlCl3. अच्छा, RX जो है ना, इसमें जनरली RCl लिया जाता है, ठीक है. आई एम राइटिंग RCl, बट इट कैन बी एनी alkyl halide. Alkyl chloride are quite quick to react in this case. That is why we are taking alkyl chloride. Otherwise कोई भी आप ले सकते हैं. Here you will have the halogen atom as it is, और यहाँ पे you will get the alkyl group in the ortho position, and similarly in the para position you'll have halogen atom here, और यहाँ पे आपके पास alkyl group. Then another reagent is Friedel-Crafts acylation. You'll have C double bond O, and again Cl लेते हैं, but again I'm taking halogen in the presence of AlCl3. So this is what this is. So क्या बोलते हैं बताइए जरा? एसिड हैलाइड है ना, एसिड हैलाइड. अगर मान लीजिए CH3 रहता, C डबल बॉन्ड O एंड Cl, तो क्या बोलते हैं इसको? कौन सा एसिड है? एसिटिक. एसिड का एसिड है, एंड देन व्हाट्स द हैलोजन हियर? क्लोरीन इज द हैलोजन. द IUPAC suffix for this is oil halide. ये हो जाता है एसिटाइल हैलाइड. यहाँ पे देखिए अब प्रोडक्ट क्या बनेगा. द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी हैलोजन एटम एज इट इज. In the ortho position you will have C double bond O and R, और वही सेम चीज पैरा पोजिशन में आ जाएगी. We'll have the halogen atom as it is, and here you will have double bond O और इधर R. Please write this products. इसको please practice कर लीजिएगा, ठीक है. Now what I'm going to write here is what are the different electrophiles. So in this case X positive will be the electrophile. Halogen with a positive charge will be electrophile. In this case NO2 positive will be the electrophile. एंड नेक्स्ट में H2SO4 में जो भी आपके पास यहाँ पे ना SO3H है, बस SO3 लिखिए. H और पॉजिटिव चार्ज विल बी इन सल्फर ऑब्वियसली, बट पूरे में पॉजिटिव चार्ज लगा सकते हैं आप. हियर द पॉजिटिव चार्ज विल बी ऑन alkyl. Here the positive charge will be on R, C positive, double bond O. So these are the electrophiles in these cases, and I hope you know the names of these reactions. The first one, it is known as nitration. Well, the first one is halogenation. The second one is known as nitration. Third one is known as sulfonation. The fourth one is known as Friedel-Crafts alkylation. And this one is known as Friedel-Crafts acylation. Friedel-Crafts acylation. Okay. Please copy this down. Raise your hand once you're done. ये हमने जनरल लिखाया है आप लोगों को. अभी हम बहुत सारे आपको 5-6 प्रॉब्लम्स देंगे, जिसमें से यू विल हैव टू राइट ऑल द प्रोडक्ट्स. बाय द वे इसमें एक नोट हम देते हैं. पैरा प्रोडक्ट्स आर जनरली वो मेजर प्रोडक्ट्स होते हैं. राइट एंड नोट हियर. पैरा सब्स्टिट्यूटेड products are major products. Raise your hand once you're done.
Waiting for Rishita. Both of you are done. सवाल लिखिएगा, है ना? Sir, I didn't write the note. Can I just see the note? Yeah, sure. सारा substituted products are major products. ठीक है? Okay, sir, thank you. सवाल लिखिए. Write the products for following. Write the products for following and write the products for write the name of products. Name of products for the following and identify the SE reaction. ठीक है? तो सवाल क्या है उससे आपको समझ में आ जाएगा जब हम एक क्वेश्चन आप लोगों को कर देंगे. ठीक है? नंबर 1 लिखिएगा. Let's suppose we are having chlorine here and the reagent that we are taking is CH3 C double bond O Cl in the presence of AlCl3. Okay. So as you can see, this is what this is a acid halide. Acid halide है यहाँ पे. You'll have benzene ring, fluorine acetus. Here you will get C double bond O. What is the R group? CH3. CH3 बन जाएगा. Plus you will have another product which will be the Cl will be acetus. यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या लग जाएगा? CH3 लग जाएगा. ठीक है. So the name of the products. अब नाम कैसे लिखना है इसको? ठीक है. अब इसके लिए नाम तो शायद आप लोगों को शायद नहीं पता हो. But anyone can guess the name. लास्ट ईयर हमने आप लोग को बताया था ना, एक होता है एसेट. बताया था आप लोग को. एसेट होता है, फिर उसके बाद वन कॉमन नेम जो इस्तेमाल करते हैं एसेट एंड फॉर्म. इफ यू हैव इन एसेट, इफ यू ऐड एसेट ACET ठीक है, विच इज CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये फ्रैगमेंट. इसमें अगर आपने हाइड्रोजन लगा दिया तो एसिटाल्डिहाइड. अगर आपने CH3 लगा दिया तो इट विल बी एसीटोन. अगर आप इसमें OH लगा दिया तो इट विल बी एसिटिक एसिड. कुछ याद आ रहा है? हर्षा, ऋषिता, फिल्मी. Yes, sir. हर्षा, आपको कुछ याद आया? Yes. है ना? उसी तरह से Okay, देखिए दिस फ्रैगमेंट हियर, ये फ्रैगमेंट जो है ना पूरा, दिस इज एसिटोफेनॉल. CH3 C double bond O, CH3 C double bond O. It will be what? It will be acid. In that we have added benzene ring. Phenyl जिसका कॉमन नेम होता है एसिटोफेनॉल because it is a ketone, and then chloro is in the ortho position. ठीक है? आई एम राइटिंग द नेम्स. थोड़ा नेम आपको अगर अटपटा लगे तो इसको आपको संभालना पड़ेगा. So it will be ortho, chloro, एसिटोफेनॉल. ठीक है. और ये क्या हो जाएगा? पैरा क्लोरो एसिटोफेनॉल. क्लोरो एसिटोफेनॉल. ठीक है. Now what type of reaction is this? It is Friedel-Crafts acylation. ठीक है. आपको ये तीनों चीजें दिखनी. OH in place of CH3, it will be phenol. In place of CH3 अगर ऐसे होता like this, Yes. this will be benzoic acid. Okay, sir. Phenol will be like this. Benzene ring directly attached with OH. This will be phenol. Acetophenol.
एसिटोफिनॉन तो ये है ना, यही तो एसिटोफिनॉन है, इसमें हमने क्लोरीन लगा दिया है ना, गॉट इट। Okay, sir. दिस इज फिनॉल, OL, ठीक है। Yes, फीन sir. है आपके पास, फीन इज एक्चुअली द ओल्ड नेम ऑफ बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग के केस में एक चीज आप लोगों को बता देते हैं, जनरली जो भी चीज, थोड़ा सा गौर से सुन लीजिएगा, इट इज रिलेटेड, काफी ज्यादा रिलेशन है, जो चीज आप पढ़ते हैं उससे आपको कोई चीज आपको ऐसे सुकून मिल जाएगा सुन के। मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स व्हेन यू आर लर्निंग दैट सब्जेक्ट ना, तो जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स वो ग्राउंड अप बना है। फॉर एग्जाम्पल जब नंबर्स की ज्यादा जरूरत नहीं थी, जब वी हैड ओनली सम शीप्स एंड सम काउस एंड सम गोट्स, वी ओनली नीडेड नंबर्स टू काउंट। नाउ एज द नीड इंक्रीज्ड, then we increase the mathematics also. Same goes for physics also, it is from bottom to top. But in chemistry, what has happened? Chemistry, when it was not even a subject, when people even did not know the structure of aniline, उस टाइम पे भी देर वॉज अ कंप्लीट, एक कंपनी था whose work was to produce aniline. We did not know any structure about aniline, कोई थ्योरी नहीं थी हमारे पास, but we were producing aniline, ठीक है। So that is why what has happened, जो कॉमन नेम्स है ना, जिस चीज से पुकारते थे लोग, उसी को रख लिया गया। If it was have been built from bottom to top, then it would have been easier. But since पहले इंडस्ट्री आई, उसके बाद फिर केमिस्ट्री आई, that is why whatever industry was using the names, whatever names they were using, we have to adopt the same name. That is why you will see that even though we have IUPAC nomenclature, but ethanoic acid, rarely you will find ethanoic acid written anywhere in the NCERT also. You will always find acetic acid. Why is that? Because in the industries, people always use acetic acid, and we have to train you for that only. So it was very, I mean, it is very difficult to change the industry because वहां पे जो age होगी लोगों की, that is above 30, right? So you cannot teach them anything like something new. If you are going to teach them, it is going to take a long while. That is why whenever you are learning about organic chemistry, खास तौर से यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, that it has been from top to bottom. Bottom to top अगर रहता, then it would have been very systematic. But it is from top to bottom. तो top में जो भी चीजें थी, उसको हम लोग को adhere करना। Similarly यहाँ पे देखिए फेनॉल बोल रहे हैं, अब ये बहुत दिक्कत होती है ना, जैसे व्हाट इज दिस, चलिए OH मान लेते, OH नहीं, इसको ऐसे कर लेते हैं Cl, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड, है ना। और लेकिन अगर यहाँ पे Cl, ये अराइल क्लोराइड है, ये तो बेंजाइल, ही बेंजाइल कैसे, बेंजीन बेंजीन तो यहीं तक है, यहाँ तक कैसे आ गया बेंजाइल, ठीक है। बट इट हैज बीन लाइक दैट, लोग इसको बेंजाइल क्लोराइड बोल रहे थे, अब उनको चेंज करना तो मुश्किल है, तो आप ही सीख जाइए बेंजाइल क्लोराइड है। पर्सन में आई ऋषिता एंड हर्षा, कि व्हाई डू यू हैव सो मच कंफ्यूजन, ठीक है। चलिए, दिस इज फेटल ऑफ एसाइलेशन, बाकी हम जल्दी जल्दी सब बनाते हैं यहाँ पे, आप तो करिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, नेम अगर कंफ्यूजन होगा ना आपको, तो नाम आप उनसे पूछ लीजिएगा, हम आपको हेल्प कर लेंगे, ठीक है। हम तो ज्यादा स्पेस नहीं दे रहे, बिकॉज आई कैन मूव थिंग्स अराउंड, आप अपने हिसाब से स्पेस दे दे के लिखिएगा, ठीक है, बिकॉज यू हैव राइट द नेम ऑफ रिएक्शन ऑल्सो। और से एक चीज दिल में मत लीजिएगा, जैसे आई हैव नॉट रिटन हियर कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, इसको दिल पे नहीं लेना सब। लाइक क्वेश्चनर कैन गिव यू एनीथिंग, आपको उसके हिसाब से आंसर देना पड़ेगा, बट व्हेन दे आर आस्किंग यू टू राइट नाइट्रेशन, फॉर एग्जांपल दिस इज नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन में आपको लेकिन कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। इन सब चीजों को हम ध्यान दीजिएगा, दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू एज, आपको बोर्ड्स में सवाल जिस तरह से मिल सके, ठीक है। समटाइम्स यू विल सी कंसंट्रेटेड, समटाइम्स यू विल नॉट सी कंसंट्रेटेड, ठीक है। यू विल हैव आयोडीन, और यहाँ पे मान लेते हैं आपके पास एक फॉर्म H2SO4। फिफ्थ क्वेश्चन लिखिए, ब्रोमीन, Cl2 और AlCl। सिक्स क्वेश्चन लिखिएगा, ब्रोमीन,
P carbon atoms, chlorine और AlCl3। ठीक है, चलिए ये सारे रिएक्शंस कीजिए आपको। But to send the answers on my WhatsApp.
Take 1 more minute. Okay, Rishita and Harsha, please send me whatever you have done. Answers. So, the पहला वाला तो हमने किया ही था. Okay, yes, very nice. You remember it all week. That's good. ठीक है. ठीक है. अच्छा, you don't know the name. That's fine. Very good. ठीक है. Last वाला something that we need to study. That will be last वाला सही नहीं है, but I will explain why it is not right. Rishita, waiting for you. No, Rishita, can you please turn your mic on? Yes, sir. Can you relate with one of those reactions that we have done in the ये electrophilic substitution reaction में 5 reactions है ना ऋषिता? हाँ सर. उसमें से ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो कौन सा रिएक्शन है? It's the fifth one, not the first one. सॉरी, नहीं, आई एम It's सेइंग द सेकंड क्वेश्चन जो है ना, सेकंड क्वेश्चन, दैट इज व्हिच रिएक्शन? the first one. Look at No, the reagent. the fourth one. What's the name of the fourth one? Friedel-Crafts alkylation. ठीक है. So what is attaching on the benzene ring? CH3Cl. No, in the ये जो जनरल रिएक्शन हम लोगों ने लिखा है उसमें क्या अटैच हो रहा है? RCl. RCl. हाँ सर. शो, देखिए नोटबुक भेजिए, आपका जरा फोटो भेजिए. Okay, once again, I'm asking, what is attaching on the benzene ring, Rishita? The first part, like the first part is in X, right? नहीं, वो तो वही वैसे ही है ना, whatever is in the reactant वो तो वैसे ही रहेगा ही, ठीक है? Okay, just R. Apart from, okay, so what is going to attach in the question? CH3. Got it? Yes, sir. अब एक बात बताइए, आपने यहाँ नाम भी नहीं लिखा है किसी का, Friedel-Crafts alkylation वगैरह, आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल भी नहीं लिखा है, ठीक है? वो ऐसा मत रखिए कि याद रहेगा हमको, ठीक है ऋषिता? प्लीज राइट इट डाउन, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल वाला तो सवाल आएगा, ठीक है? There was one question in the board examination. Although
it is not a part of this class. ये ऐसा है, like in the NCERT it has been explained in such a way that you know these reactions already. The mechanism is also explained in the 11th standard. How the AlCl3, it takes one chlorine atom, and when it takes the chlorine atom with its electron, the CS3 or the alkyl group in general, it will gain a positive charge, and then the positive charge will attack on the benzene ring. फिर benzene ring से resonance होगा, फिर वहां से hydrogen निकलेगा. So all of these things, the mechanism has been explained. But जो चीज important है ना अभी यहाँ पे, that is at least what the electrophiles that you have to remember. Please write it down. ठीक है. And also the name also. Name चलिए, name भी लिख लीजिए, लेकिन कम से कम इस बार तो लिख लीजिए. आगे तो बाकी चैप्टर से मत लिखिएगा. But right now, please write the names also of these reactions. The first one is halogenation. The second one is sulfonation, nitration, sulfonation, Priedel-Craft alkylation, and Priedel-Craft acylation. ठीक है ऋषिता? Yes, sir. ठीक है. चलिए, पहला वाला तो आपका सही नहीं है. सेकंड NO2 सही है, SO3H6. ठीक है, चलिए, ठीक है. नेम आपने नहीं लिखा है. Let me solve this for you guys. Sixth वाला आप मत कीजिएगा, ठीक है, because sixth one is going to be a bit थोड़ा सा उसमें अलग है. Although you are going to understand it because we have done that topic already. वो concept हमने पढ़ा हुआ है. So this Br will be as it is, and we will have CS3 in this position plus the Br will be as it is. We will have CS3 in this position. ठीक है. अब दोनों का नाम हमने एक साथ ही टाइप से लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा. एक तो है ऑर्थो, ठीक है, एंड एक है पैरा. क्या है? ब्रोमोटोलॉजी. ऋषिता, आपको यहाँ पे ऐसा लेजीनेस नहीं दिखाना. यू विल राइट ओ ब्रोमोटोलॉजी एंड पी ब्रोमोटोलॉजी, है ना? आई एम राइटिंग ओ एंड पी ब्रोमोटोलॉजी. मेक सेंस? यस और नो, प्लीज टेल मी. Yes, sir. हर्षा, आपने तो नहीं लिख लिया ना? अच्छा, इन दिस केस दिस रिएक्शन इज एग्जैक्टली व्हाट ब्रोमिनेशन. ठीक है, एग्जैक्टली क्या है? ये तो इन जनरल हाइड्रोजनेशन है, लेकिन स्पेसिफिकली इट इज व्हाट ब्रोमिनेशन. चलिए अब अगला, क्योंकि हम तो इसी को कॉपी कर लेंगे इसी में, बिकॉज आई हैव टू राइट थिंग्स. Sir, it's halogenation. What? Sorry? So, bromination, alkylation, right? Bromination लिख दिया हमने, my bad. Sorry. This is FC alkylation. My bad. ठीक है. This is what ये हमारे पास है. नाइट्रेशन. अभी ये प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है ना? नाइट तो अभी वहां से प्रोडक्ट चेंज कर लेंगे. नाइट्रेशन है, एंड इंस्टेड ऑफ Br एंड दिस टू, इसको कॉपी कर लेते हैं. दिस इज मोर जनरलाइज्ड. ठीक है. सो यू विल हैव Cl हियर एंड NO2 हियर. यहाँ पे भी आपके पास Cl और यहाँ पे आपके पास NO2. दिस इज नाइट्रेशन, एंड कुछ इसी तरह के प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमको यहाँ पे. यू विल हैव आयोडीन एज इट इज, और यहाँ पे आपके पास SO3H. नाम नहीं लिखा ना हमने. वेट अ सेकंड, राइट द नेम्स. हियर आल्सो SO3H. ठीक है. सो दिस इज क्लोरो एंड नाइट्रो है. ठीक है. सो एक तो आपके पास ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, एंड देन यू हैव एंड ऑर्थो एंड पैरा. नाइट्रो और क्लोरो में, क्लोरो इज व्हाट हैज Cl, नाइट्रो हैज N. तो पहले क्लोरो आएगा अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर. क्लोरो नाइट्रोबेंजीन. दिस इज नोन एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड. ठीक है. सो क्या नाम होता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड. नाउ आयोडो इज आवर सब्स्टिट्यूएंट हियर, सो द नेम्स विल बी ऑर्थो and para. Iodo will be the substituent, so iodo, benzene sulfonic acid. This reaction is sulfonation.
sulfonation. Okay, here we'll be having two products. The Br will be as it is, chlorine will be in the ortho, Br is as it is, and chlorine will be in the para. So the names of these two compounds will be ortho and para. ब्रोमो क्लोरो बेंजीन, ठीक है, पहले ब्रोमो आएगा उसके बाद क्लोरो, ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। अच्छा, ये वाला जो है ना, इसको ध्यान से देखते हैं, ठीक है। So in this case, the first step is going to be this CH3, CH2, CH2, Cl, plus you will have AlCl3. तो AlCl3 का जो आपके पास फ्लोरीन है, you can see that aluminium is what? It is only having 6 electrons. That is why it is going to attract this chlorine, which is having lone pair electrons, and also it is going to, the chlorine with its own electron is going to attack on the aluminium. और aluminium क्या बन जाएगा? AlCl4, because chlorine is attacking with its electrons, it will have negative charge here. ठीक है, तो AlCl4 negative हो गया, plus you will have CH3, CH2 positive, CH3, CH2, CH2 positive. Now, if you look at this carbon atom, it is what? 1 degree का carbocation. ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं, CH3, this carbon atom it is having 2 hydrogens, CH2 positive, ठीक है, तो 1 degree है. Now you can see that hydride shift happening. याद अगर आया आपको, हम लोगों ने पढ़ा था hydride shift. So for a moment, what can happen? You can have CH3 carbon, CH3, this carbon will have the hydrogen here. एक हाइड्राइड यहाँ से CH2 के पास चला गया, so this will get a positive charge. ठीक है, this was 1 degree, this is 2 degree, but there is a lot of difference here. If I look at the number of alpha hydrogen according to the hyperconjugation, we have only 2 alpha hydrogen. If I look at the number of alpha hydrogen here, then in this case it is having 6 alpha hydrogen. So there is a 3-time increase in stability according to hyperconjugation, even if you ignore the plus I effect. Plus I effect भी यहाँ पे 2 alkyl group से मिल रहा है, that is so another thing. But in hyperconjugation, you can see that there is an increase of 3 times of stability. That is why this will be very stable, and this 2 degree will further react. और फिर आपके पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है, this is going to be C positive in the center. So इसकी वजह से the product is going to look something like this. The benzene ring is as it is, the Br will be here as it is, and we will get, see this carbon atom was having positive charge, है ना, और दो CH3 उसके पास, the carbon which is having positive charge is going to attack on the benzene ring. Normally आपने किस पर अटैच किया? इसको अटैच किया, because you assume that this is going to be the electrophile. But because of hydride shift, as we have studied earlier, है ना, hydride shift हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसकी वजह से you will get isopropyl group, which is also known as cumene. ये orthobromocumene हो जाएगा और ये parabromocumene हो जाएगा. Cumene is just another common name. Okay, let me just get some more space here to write the names. What will be the name? Ortho and para. देखिए, there are 2 things you can write. एक तो आप नाम ये लिख सकते हैं, it is what? Orthobromo isopropyl benzene. That group is what? 3 carbon atoms. 3 carbon के लिए propyl. And if the terminal carbon was attached on benzene ring, तो normal propyl होता. But because बीच वाला carbon attached है, it is isopropyl. You can write ortho and para bromo isopropyl benzene. Now this isopropyl benzene, it has a common name that is known as cumene. So we can write P-bromo cumene. Okay, ortho and para bromocumene. This will be your product, and this is what an example of Friedel-Crafts alkylation. FC alkylation.
Please copy this down. Dijita waiting for you. Done. ठीक है. चलिए अब ना एक दो सवाल आएंगे रिगार्डिंग द रिएक्टिविटी. ठीक है. आई मीन दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन 11th स्टैंडर्ड की जो हैलो अरीन्स होते हैं व्हेन बेंजीन इज हैविंग अ हैलोजन ग्रुप then halogen group वो plus m effect तो दिखाते हैं but their reactivity is slower than that of benzene. If I compare the reactivity of electrophilic substitution of haloarenes and benzene, the haloarenes are going to show less reactivity than benzene, and the reason is the dominant minus I effect. ठीक है. यहाँ पे सवाल लिखिए जरा. Write a question. Haloarenes are less reactive towards Se, electrophilic substitution, है ना, than benzene. Explain या फिर why आ जाएगा. ठीक है. So all of these why type of questions should be there in one sheet. तभी आप लोग अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे. ठीक है. ध्यान रखिएगा इस चीज का एक्सप्लेन करने के लिए. ठीक है. So how will you write the answer? The answer will be मेन तो आपके पास जो क्रक्स पॉइंट होना ही चाहिए आंसर में ड्यू टू स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट of halogens, the electron density in benzene ring decreases and this slows the attack on electrophile. ठीक है. Therefore haloarenes are less reactive towards Se than benzene. Se मतलब electrophilic substitution. ठीक है. This is your answer. ये एक सवाल है. अगला सवाल से सिमिलर लगेंगे बहुत सारे सवाल है. जैसे फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन दैट वी डिड इन द लास्ट क्लास कि haloarenes do not show Sn. ठीक है. बट दे शो Se. ये वाला वो वाला सवाल. और उसके बाद यहाँ पे ये सवाल सिमिलर लगेगा. एक और सवाल है जो कि आपको सिमिलर लगेगा. सेम सवाल पूछा हुआ है. आई एम राइटिंग इन जनरल यहाँ पे क्या हाइड्रोजन हम लिखेंगे बट इन द क्वेश्चन इट वाज आस्क्ड रिगार्डिंग क्लोरीन. ठीक है. तो सवाल लिखना पड़ेगा. ठीक है. प्लीज राइट हियर हाइड्रोजन्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. ठीक है. बट वहां लिखा था सवाल में क्लोरीन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बट क्लोरोबेंजीन. बट हम लोग यहाँ इन जनरल क्या लिखेंगे हैलोअरीन गिव ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ठीक है. दैट इज एस. क्वेश्चन है वाई. ऐसा क्यों होता है? आई होप यू हैव रिटन द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन. अब यहाँ पे ना दोनों चीज को हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. व्हाई हैलोजेंस आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एंड व्हाई हैलोअरीन गिव्स ऑर्थो पैरा. सो वी विल एक्सप्लेन दीस टू टर्म्स अलग अलग. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ आई विल राइट द आंसर. इन द आंसर आई शुड इंक्लूड द वर्ड व्हाई इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बिकॉज ऑफ माइनस आई. So halogens are strong
electron withdrawing group due to minus I effect. Due to minus I effect. Then you write, but since they show the electron density increases at ortho and para position. ठीक है? Therefore, ortho and para products are formed on electrophilic substitution. अब उसके बाद एक लाइन जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ठीक है, लाइन बहुत ही खूबसूरत है, उस लाइन को आप इंक्लूड कर लेंगे तो यू विल रिमेंबर दिस लाइन, दैट विल हेल्प यू रिमेंबर बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस, जो रिएक्टिविटी वाला है और ग्रुप कहां पे लगेगा उसके बाद. सो द लाइन इज रिएक्टिविटी is controlled by इसका, अच्छा, रेजोनेंस के ऊपर ना आप ऐसे प्लस एम लिख दीजिएगा, ठीक है ना, रेजोनेंस में माइनस एम भी आता है, दे शो रेजोनेंस ऊपर में प्लस एम ऐसे करके, ऊपर में नहीं, मतलब इन द ब्रैकेट यू राइट प्लस एम. रिएक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय माइनस आई, बट ओरिएंटेशन is controlled by resonance. कितना फास्ट रिएक्ट करेगा वो तो माइनस आई बताएगा इन द केस ऑफ एल्वरीन्स, ठीक है, whether it will be more reactive than benzene या less reactive than benzene, लेकिन ग्रुप्स कहां लगेंगे वो रेजोनेंस बताएगा. आई होप दिस इज क्लियर. यस और नो? रशिता एंड हर्षा, दोनों बातें क्लियर हैं? Yes. चलिए, प्लीज कॉपी दिस डाउन. अब एक और सवाल आने वाला है जिसमें मतलब ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस एक ही टॉपिक से और बहुत सिमिलर लुकिंग क्वेश्चंस हैं. राइट नाउ यू विल नॉट फाइंड इट सिमिलर, बट जब अगर आप रिवाइज नहीं करें और एग्जाम में ये सवाल आपको दिखेगा ना, तब आपको समझ में आएगा ओ माय गॉड कौन सा आंसर लिखना था. बाय द वे, अब इसमें हम आपको बता देते हैं कि मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है, सिंस दे शो रेजोनेंस, जिसमें प्लस एन होता है, ये आपको लिखना जरूरी है. इफ यू आर नॉट गोइंग टू राइट दिस लाइन तो एक्सप्लेनेशन ही नहीं होगा ना भाई ऑर्थो पैरा, ठीक है. इन द क्वेश्चंस अगर डिटेल आंसर जनरली वो स्कूल वाले मांगते हैं, अगर बोर्ड्स में आप इतना भी लिख के आ जाएंगे ना, देयर इज आल्सो वन मार्क्स की इसमें आंसर यही सेम सवाल है रिगार्डिंग क्लोरीन. क्लोरीन इज स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, बट क्लोरोबेंजीन गिव्स ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. व्हाई? द मार्किंग स्कीम इट हैज ओनली वन लाइन आंसर ड्यू टू डोमिनेटिंग प्लस आर इफेक्ट. ये जो हमने इतना पूरा एक्सप्लेन करके लिखा उसका बस उन्होंने एक लाइन में आंसर दे दिया. अगर किसी ने प्लस आर इफेक्ट का जिक्र कर दिया, दैट मींस प्लस एम इफेक्ट, देन आल्सो इट इज करेक्ट, ठीक है. दैट इज व्हाई यू विल सी कि जो बोर्ड्स में मार्क्स आते हैं ना, मतलब बहुत ज्यादा. आई थिंक हर्षा आपको ये इस बात का पता होगा, लाइक कृष्णा के मार्क्स प्री बोर्ड्स में और कृष्णा के मार्क्स बोर्ड्स में, राइट हर्षा? यू रिमेंबर दिस या फिर भूल गए आप अपने भाई का रिजल्ट? Yes. है ना, तो देयर इज अ ह्यूज जंप प्री बोर्ड से बोर्ड्स में. द रीजन इज दैट जो बोर्ड्स आंसर चाहता है ना, वो स्कूल वाले कुछ दूसरा ही आंसर चाहते हैं, ठीक है. तो हम तो जनरली नहीं, लेकिन वही प्रिपेयर करते हैं कि बोर्ड्स ने जो क्वेश्चन पेपर दिया है उसके साथ मार्क्स स्कीम भी देती है बोर्ड्स. आई ऑलवेज हैव अ लुक एट द मार्क्स स्कीम और उसी तरह से फिर हम आंसर लिखाते हैं. दिस एक्सप्लेनेशन इज फॉर यू टू व्हेन यू आर रिवाइजिंग, देन यू शुड अंडरस्टैंड दैट पॉइंट. रटना तो नहीं है ना आंसर, but you should know what in what point or what word I have to include in order to get the complete marks. ठीक है. अब नेक्स्ट है हमारे पास दिस एसी इज कंप्लीटली डन. अब यहाँ पे एसएन कराएंगे हम किसका? हेलो अरीन का. ऑल ऑफ यू डन ना? ऋषिता एंड हर्षा, ये दोनों लिखे आपने ये पॉइंट? ऋषिता आर यू डन? Yes, sir. ठीक है. अब लिखिएगा नेक्स्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलो अरीन. न्यूक्लियोफिलिक
substitution of haloarine. Okay. First point is that we have already seen that haloarenes will not show SN, they show SE. Okay. So what are the reasons why it does not show SN? उसको हम लोग लिखते हैं. Right here, haloarenes don't show SN at room temperature. ठीक है, at room temperature due to the following reasons. ठीक है. नंबर 1, पहला रीजन क्या है? The partial double bond at carbon CX bond that is present due to resonance, it is very difficult to break. ठीक है, so you will write partial double bond at CX सिर्फ हैलोअरीन के केस में ड्यू टू रेजोनेंस is difficult to break. Is difficult to break. ठीक है, पहला पॉइंट. I hope you are writing this with me. Second, let us suppose we break the carbon halogen bond. Then we will get a benzene ring जिस पे positive charge हो. And please understand, I hope you have this benzene ring in your mind. The benzene ring, one of the carbons of benzene ring is having a positive charge. All the other carbon atoms are sp2. sp2 means more percentage S character, means more electronegative, they will pull the electrons. So that is why the phenyl carbocation, even if we break the carbon halogen bond, the carbocation that we are going to get, it is going to be very unstable. Second reason kya hai? The phenyl carbocation is very unstable. Is very unstable. तीसरा देखिए, the first 2 points ना अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो इसको अब समझिएगा that it has been written from the perspective of SN1, because in SN1 we have to break the CX bond and then there will be carbocation, right? Now let us see why SN2 cannot happen. Now in SN2 what happens? SN2 में if SN2 is happening with alkyl halide, let us suppose, then nucleophile attacks on the substrate. Now, nucleophile is going to be electron rich. Our substrate is haloarine, which is containing benzene ring, which has a 3 pi electrons, 3 pi bonds. That is also electron rich. So both the electron rich species are going to repel each other. So you will write the third point, repulsion between, another reason है कि क्यों नहीं होता है, repulsion between nucleophile and between electron rich nucleophile and benzene. दोनों ही क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच. The fourth point, the sp2 carbon of CX carbon halogen bond of CX bond doesn't have enough partial positive charge to attract nucleophile. I hope all the 4 points are completely clear. Harsha and Rashita, please tell me. Sir, Ji. in the third point, doesn't benzene have positive charge? It's in count. Benzene में positive charge होता है. In resonance? बेंजीन में जो रेजोनेंस होता है उसकी वजह से हैलोरीन का रेजोनेंस दिखाएं, है ना? इसमें लेट अस सपोज मान लीजिए इसमें होगा तो यहाँ पे होगा
talking about this delta positive. Yes, sir. But this is on the halogen atom, no? वो तो मतलब that is a leaving group. इससे तो कुछ उतना फर्क पड़ता नहीं है. Like even if let's suppose अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा भी, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल मान लीजिए आया भी अगर, ठीक है, वो इस पे अटैक तो नहीं कर पाएगा बिकॉज इट इज ऑल्सो हैविंग लोन पेयर लोन पेयर भी तो है इसके पास, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, चलिए ठीक है, मान लीजिए देयर इज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बट देयर इज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो आई मीन न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी होती है इट इज गोइंग टू अटैक ऑन कार्बन एटम. एसएन की जो डेफिनेशन ही है दैट एसएन में क्या होता है, इट इज गोइंग टू अटैक ऑन कार्बन एटम, है ना? Okay. पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, अगर आप इसको अल्काइल हाइड से रिलेट कीजिए तो पॉजिटिव चार्ज शुड बी ऑन दी कार्बन एटम. कार्बन एटम पे होता तभी जाके वो न्यूक्लियोफाइल से अटैक हो पाता. दैट हाइड्रोजन एटम उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक कर भी नहीं पाएगा, आई मीन अटैक करेगा लेकिन फिर वो बॉन्ड टूट जाएगा, बिकॉज दैट बॉन्ड इज नॉट गोइंग टू बी एनी बेनिफिशियल, उसके आगे कुछ रिएक्शन होगा ही नहीं. तो ईच एंड एवरी रिएक्शन वो ऐसा होता है कि अगर बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड टूट भी सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज रहती है. इफ सम बॉन्ड इज फॉर्मिंग दैट बॉन्ड कैन आल्सो बी ब्रोकन. तो ये इस तरह का इक्विलिब्रियम चलता रहता है. इवन लाइक अगर बहुत ज्यादा आपके पास अगर कोई बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल बन रहा तब नहीं, बट फॉर एग्जांपल इन एवरी केस यू विल हैव दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम टाइप ऑफ थिंग. अब इसके आगे अगर रिएक्शन जाएगा नहीं तो ये बाद में इक्विलिब्रियम में ही रह जाएगा, कुछ होगा ही, कुछ नथिंग इज हैपनिंग इन दैट सेंस. ठीक है, मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल ने ऐसे करके अटैक कर भी दिया हाइड्रोजन पे, ठीक है, फिर ये बॉन्ड टूट जाएगा, फिर अटैक कर, तो ये चलता रहेगा, इससे कुछ होना नहीं है. यू विल नॉट गेट एनी प्रोडक्ट पर से. Raise your hand once you're done. You're done. अब रिएक्शन तो होता नहीं है लेकिन रिएक्शन हम लोग करा सकते हैं, ठीक है. Right here I will also explain this point, but please write this with me. Haloarenes show SN on two conditions. On two conditions. ठीक है, इसमें से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तब जाके हो जाएगा. एक को बोला जाता है ड्रास्टिक कंडीशन, जिसका मीनिंग होता है एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. क्या बोलते हैं इसको? ड्रास्टिक कंडीशन. ड्रास्टिक कंडीशन, ठीक है. सेकंड है प्लेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो और पैरा पोजिशन. आगे बढ़ने से पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं, व्हाई आर दीज टू कंडीशंस वर्किंग.
Now, the problems we faced in the reaction of nucleophile with haloarine was first of all the breaking of CX bond. Now, at high temperature, we can break that CX bond. I hope that is understandable. Yes or no, Harsha and Rashita? Temperature high करेंगे तो bond तोड़ना आसान हो जाएगा. ठीक है. अच्छा. And if you are going to have high pressure, अगर high pressure होगा तो अपने आप ही when you will have high pressure, then अपने आप ही nucleophile and halogen will be वो नहीं चाहते हुए भी सामने आ जाएंगे. They will be closer together and they will be having more collisions. Make sense? क्या ख्याल है? At high pressure, nucleophile and haloarine they are repelling each other at room temperature. High Yes, pressure sir. करेंगे तो they are going to collide with each other. ठीक है? So I hope that first that condition will help us do SN on haloarine, nucleophilic substitution in haloarine. Second, a placement of electron withdrawing group at ortho and para position. If you are going to अच्छा meta position में plus m minus m mesomeric effect, it does not work. I hope you know that. याद है आप लोग को कि at meta position mesomeric effect does not work at meta position. याद है नहीं याद है आप लोग को? Guys? Yes. ठीक है, इसको अभी आप ऐसे ऐसा मतलब ऐसे थ्योरी याद करने की समझ लीजिए कि मेटा पोजीशन नहीं काम करता. ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा में काम करता है. एज वी हैव सीन आल्सो ना कि हाइड्रोजन एटम इमेरिटस बेंजीन रिंग में जब अटैच करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना इफेक्ट कहां दिखाता है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन दिखाता है. सिमिलरली इफ आई एम गोइंग टू प्लेस अ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप दैट इज माइनस एम ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, तभी वो अपना कुछ इफेक्ट दिखा पाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे व्हेन वी आर गोइंग टू प्लेस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, देन इट इज गोइंग टू डू व्हाट? इट इज गोइंग टू डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा. If it is going to decrease the electron density from benzene ring, it will be easier for nucleophile to attack on the benzene ring. Benzene ring में attack करना क्या हो जाएगा? आसान. ठीक है, so I hope both of these conditions are making sense कि how it is going to help us react benzene with nucleophile. अब हम लोग क्या देखते हैं? Reactions देखते हैं. पहला तो है आपका drastic condition वाला. We are going to take chlorobenzene. देख लीजिए आराम से, उसके बाद लिखिएगा. ठीक है, डोंट राइट नाउ. The nucleophile that we are going to take is OH negative, and OH negative will be obviously from aqueous elimination. Aqueous pH भी आप ले सकते हैं. Now the temperature is 623 Kelvin and the pressure is 380. ठीक है, then you are going to get क्लोरीन के बदले आपको क्या मिल जाएगा? OH मिलना चाहिए, but because we are going to get phenol and phenol is kind of acidic in nature, तो यहाँ पे आपको phenol आयन नेगेटिव और Na पॉजिटिव ऐसे मिलता है. ठीक है, दिस इज सोडियम phenol. So we further treat this with what? H plus, and then you get phenol. So first step में you have NaOH in drastic condition. Second step में we will have to add what? We have to add H plus. ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं reactions at what? When you are going to add any substituent. Now I'm not going to show the two steps. I'm going to write the final product in the following reactions. ठीक है, so now we have chlorine at ortho position. Let us suppose we are having NO2, N and 2 oxygen. ठीक है, आप उधर लिख लीजिए, ऐसे बच्चों को वियर्ड लगता है. ये लिख लीजिए आप, ये आपको अच्छा लगेगा. ठीक है, now here we are going to use what? Aqueous NaOH again. Now we are अब इसमें ना आपको देखिए इतना याद नहीं रखना है, आप हीट याद रख लीजिए. अदरवाइज आप अगर अपने एनसीईआरटी में देखेंगे देन दे हैव स्पेसिफाइड ईच टेम्परेचर प्रेशर सारे केसेस में. व्हेन यू हैव NO2 एट ओनली ऑर्थो पोजीशन, व्हेन यू हैव NO2 एट para position, when you have NO2 at ortho and para position both, when you have NO2 at all the ortho and all the para position. ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं इसमें ना, ये वाला आपको तो नहीं दिया, अभी हम लोग पहले पैरा पोजिशन लेते हैं. पैरा पोजिशन यहाँ पे आपके पास aqueous NaOH. I am going to write the temperature, some temperature लिख देते हैं आपके लिए, but you don't need to remember. आप सिर्फ हीट का सिंबल दे दीजिएगा 443 केल्विन. ठीक है, 443 केल्विन. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको? H plus.
So what will happen? The chlorine will be replaced by OH. NO2 will be as it is, है ना? NO2 वैसी का वैसी रहेगा, यहाँ पे OH आ जाएगा and NO. This is the intermediate always going to be, है ना? वो intermediate हमेशा रहेगा. अब इसी को तो हम तो थोड़ा कॉपी करके आगे बढ़ जाएंगे, आपको तो लिखना पड़ेगा. The temperature is going to change if you are going to add one nitro group in the ortho position also. यहाँ पे हम क्या चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे और NO2 group डाल दिया हमने. Now we have NO2 group in the ortho position as well as in the para position. Now the temperature that you will need is 368. जहाँ तुमको याद है 368 Kelvin, and this NO2 will be intact like this. अब तीसरा केस होगा जब आपके पास you will have NO2 in all the both ortho position. आपने यहाँ पे NO2 डाला है and here also you have added NO2, and in this case you just need to warm it. Warm का मतलब you have to heat it इतना कि you are able to touch it, है ना? एक होता है hot, एक होता है warm. मतलब ये सारी चीज भी डेफिनेशंस हैं केमिस्ट्री में. लाइक देयर आर प्रोसीजर्स, ना जैसे कि रेसिपी होता है ना, उसी तरह से प्रोसीजर्स होता है टू मेक एनी कंपाउंड. तो टू मेक एनी कंपाउंड यू हैव प्रोसीजर्स. वहां पे लिखेंगे वार्म द, बोलते हैं वार्म द रिएक्शन मैट्रिक्स बोलते हैं. इसमें रिएक्शन सारी चीजों को वार्म करते हैं. वार्म का मतलब आप तब तक हीट करना जब तक आप टच कर सकें. एक होता है हॉट, ठीक है, हीट इट टिल इट्स हॉट. हॉट मतलब आप टच नहीं कर पाए, टच करें तो आपको गर्म लगे. फिर बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग तो आप लोग जानते हैं क्या होता है. बट वार्म एंड हॉट, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स इन केमिस्ट्री. ठीक है, सो दीज आर द रिएक्शंस. अगर आपने नहीं लिखा है अगर तो लेट मी शो यू गाइस. These are the four reactions. In the first case, we are doing drastic conditions. High temperature भी है, high pressure भी है. In second case, we have high temperature in order to ease out the breaking of CX bond. उसके बाद temperature थोड़ा कम कर दिया because we are adding more electron withdrawing group. In the third case, we are adding more electron withdrawing group. एक आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है, ऐसे तो सवाल नहीं आता है इससे, लेकिन एक रिक्वेस्ट ये है कि पेज नंबर 330 वहां पे ना दे हैव एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्लेस nitro group in the ortho position, what happens when you place nitro group in the para position, what happens when you place nitro group in the meta position. बस दिखाया है, and they have shown that when we are going to place the nitro group in ortho and para position, you are going to get a negative, you're going to get a positive charge. ठीक है, आपको क्या होगा, you are going to get a nitro group ना, nitro group में हाँ, you're going to get a negative charge on the ortho and para position when the OH is going to attack on benzene. जब OH अटैक करेगा ना, तो वहां से थोड़ा सा हम आप लोग को दिखा देते हैं, इन जनरल वाला दिखा देते हैं, ठीक है ना. Are you guys done with this whole thing? Yes or no, please tell me. Writing. Yes, sir. Right. अच्छा, आराम से लिखिए, raise your hand once you're done. फिर हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है. Why meta position does not work? The first two you can write the names, जो भी आपको अगर नाम लिखना है तो. Yeah. This last one, it has a common name, इसको picric acid बोलते हैं. Picric acid, ठीक है. We are going to see picric acid once again in phenol. Both of you are done ना? आगे बढ़े हम लोग. Yes, sir. ठीक है. So we have, I'm not adding any groups here. Double bond, single bond, double bond. You will have chlorine. देखिएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे आपको, ठीक है. Let us suppose you have OH negative, और OH negative is attacking on this carbon atom, and alpha carbon पे अटैक करेगा.
Now, as soon as it is going to attack on the alpha carbon, as you can see, ये आपके पास एक bond है sigma, this is also sigma, this is also sigma, ये आपके पास pi. So obviously pi bond is going to break because it is already having 4 bonds. एक bond तो break होना ही है. Sigma और pi में से pi is weaker, so this pi is going to break like this. ठीक है. अब उसके बाद का स्ट्रक्चर क्या होगा? Chlorine and OH, both of them are here right now. Chlorine अभी निकला नहीं है. You are having this pi bond is broken, this pi bond is intact, this pi bond is also intact. You are having negative charge in the ortho position. दिख रहा है आपको? सही है? बोलिए. अरे बोलो भाई. Yes, sir. है ना? अब ये क्या होगा? This will show resonating structure like this. अब यहाँ पे आएगा तो this pi bond will break and you will go like this. OH, Cl, double bond here. This double bond is intact. This negative charge is here. ठीक है? Now, if we are going to place, ध्यान दीजिएगा, मेटा पोजिशन पे नहीं आया. If we are going to place a electron withdrawing group at ortho position, ध्यान दीजिएगा, when the hydroxyl group, OH group is attacking on benzene ring पे negative charge आ रहा है. Negative charge को stabilize करने के लिए we will have to add a electron withdrawing group. If you are going to add electron withdrawing group at the ortho position, then only it is going to work. Or we have to add the electron withdrawing group at para position, then only it is going to work. Why? Because the negative charge is appearing at ortho and para positions only. Meta position में negative charge appear ही नहीं हो रहा है, तो वहां पे कोई इसका effect होगा ही नहीं. Does that make sense? Yes or no? Rishita and Harsha? Yes, sir. Okay. So that is why we need it at ortho or para position. Page number 313. I don't know whether new book, old book. I think old book का ही 313 होगा. ठीक है. So if you see there, वहां पे आप एक ना वैसे हैलोजन पलटते रहिएगा, तो वहां पे आपको देखिएगा ना एक जगह एक पेज में बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बहुत सारे बेंजीन नाइट्रो क्लोरो लगा हुआ है. उस पेज पे आप लास्ट में देखिएगा देयर विल बी अ बॉक्स. ठीक है, उस बॉक्स को थोड़ा पढ़ लीजिएगा, यू विल अंडरस्टैंड द पॉइंट. बट बेसिक यही याद रखना है कि नेगेटिव चार्ज अपीयर्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन. दैट इज व्हाई वी नीड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो और पैरा पोजिशन. ठीक है, आगे बढ़े. That's funny. Yes. ठीक है, अब देखिए, नाउ यू हैव छोटा सा पोर्शन लेफ्ट है कैरलिटी का, एंड उसको नेक्स्ट क्लास में ही कर लेंगे, आप अच्छे से कर लेंगे एक बार तो कुछ हो जाएगा. Now there is one lecture that you need to watch, and I think you can watch it right now because reactions सारे complete हो चुके हैं. Chirality is the only topic that is left. जिसमें हम लोग enantiomers पढ़ेंगे, and then we will talk about chiral carbons also. That is an important topic. But अभी now you are okay with the reactions, आपको reactions का headache नहीं रखना है, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा. ठीक है, even though it is a topic of SN1 and SN2, we are not, I generally don't take at SN1 and SN2. reactions से आप खाली हो जाइए एक बार, उसके बाद अलग से स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है उसको पढ़ते हैं. ठीक है, so we will do that tomorrow. Can you see the Learnivio app? Is there any test updated? ये टेस्ट होना चाहिए वैसे. Reactions of haloarenes.